हेलो। जो कोई देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब। जो कोई देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब। जो कोई देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब।
Hmm. This is a nice view. I'm doing a little bit trial and error. Hey, गिर गया. Okay, जुगाड़. Hello, hello, those who are watching, please drop a comment. So if I do this, Chrome tabs, yep. So if I'm switching, will it show? Yeah. So we are back, and I guess I'm showing my face for the first time. So yeah, this is me. And सॉरी फॉर द ब्रेक. थोड़ा सा जो लास्ट अकाउंट मेरा ब्लो हुआ वहाँ पे आई मीन इट वाज वेरी heavy for me. So I took a break. Let me know if the audio quality is good. How is the audio quality? जो देख रहा है प्लीज बताओ. Okay, so this is my first live ever. यानी कि ऐसा मैं जा रहा हूँ. So this is the listed first live of mine. So hopefully I'm doing it correct because laptop it doesn't support well, and I don't have any other option to check if I'm doing it correct or not.
Um, yeah. Okay. Okay. Thank you, Patel. Order is good. Thank you. Yes, so I've started again with a capital of around 150, $160 around somewhere. Last account was around $200. Then I blew my account and then I've started it again and I've took two trades already in which around let's say three, five, $6. I could say I'm down by $6 and yeah, totally we are focusing on psychology. Last time it was बहुत difficult psychology हुआ था पूरा खराब psychology I could say. So yeah, let's see कुछ तो करना पड़ेगा यार मेरा फेस पूरा डार्क हो रहा है. So yeah, what I'm gonna do is I'm gonna take one trade per day. अभी यहाँ पे सेटअप तो बने हैं बट still did not take the trade. रीजन बीइंग मुझे हाँ, पैसे बचा के सारी चीजें करनी है ना कि पैसे उड़ा के सारी चीजें करनी है. So I'm gonna trade whenever I get the opportunity, but I will just trade it once and उसके बाद मैं trade नहीं करने वाला हूँ. Okay, so those who are watching me for the first time, I'm going to tell you guys कि मैं analysis कैसे करता हूँ, मेरा क्या strategy रहता है, वो सारी चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ. You could ask me questions and yeah, that's pretty much. So let's go to trading view. I guess that would be better. Yeah, I'm on trading view. यहाँ पे ये मेरा पूरा बैक टेस्टिंग है. Ignore this. Let me open up another chart. Okay. Wanda. Okay, fine with Wanda. Yeah, just let me clear it a little bit. Remove all drawings. All drawings are removed. I go to 4 hours time frame. I check what is the structure going on right now. So I trade on structures basically. तो जो मार्केट है तो वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. रीजन मैं बताता हूँ पहले. जो मार्केट है पहले स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. इट डज नॉट गो दिस एंड देन दिस एंड देन दिस एंड देन दैट एंड ऐसे नहीं जाता है. ठीक है, तो मार्केट कैसे जाता है कि ये पहले ऐसे ऐसे ये स्ट्रक्चर में ही मार्केट जाता है. ठीक है, सो आई बेसिकली ट्रेड ऑन दिस स्ट्रक्चर. तो इससे क्या होता है कि पहले एक चीज है कि ट्रेंड समझ में आता है. सेकंड चीज़ वहाँ पे जो अपना एंट्री एग्जिट है वो डिफाइन होता है कि आपको एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे करना है, कितना टारगेट लगा सकते हो, कितना स्टॉप लॉस ले सकते हो. मेन मैंने जो सीखा है इट इज कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है और स्टॉप लॉस क्यों लगाना है. सो these are the two basic things that I have learned from my past experience and yeah, I have learned my lesson and let's see how it goes again. We have started again and let's see. I'm not going to jinx it or I'm not going to do anything like that. So let's see how it goes. So yeah, I come to 4 hour. क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में है. ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई अगर आपको समझ में आता है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपको समझ में आता है तो वी कुड से दैट द मार्केट इज एट अ रेजिस्टेंस एट अ बिगर टाइम फ्रेम. So let me change the color. Yep, is this cool? Yeah, let's work with this. So it's at a resistance at a bigger time frame, and from resistance it is taking the resistance. It is going down, it is going to drop, but till where you don't know. So that is another question, and you cannot, guess it or you cannot define it कि ये कहाँ तक जाएगा. Then comes with the resistance. I'm marking the support zone. So what I think is for me, according to me, this is the support zone. Let me color it in green. अरे वाह, ये सही है. Okay.
Why I'm saying this? Because यहाँ पे you could see market has come here, it has taken support, it has bounced back, it has come here, bounced back, it came down, took the liquidity over here, then bounced back to the resistance zone, came down again, took liquidity, then bounced back up, took support, gone to resistance, came down to liquidate all the buyers, then went up, took the liquidity over here, then it came down again to the support, bouncing, support, bouncing. So what I think is it is kind of stuck in a range is what I think in a bigger time frame. Obviously, you could trade into this range too. Reason being कि if you see यहाँ से यहाँ तक का पिप कैलकुलेशन अगर आप करते हो तो ये 2500 पिप्स का है, ठीक है, रेंज जो है, तो ये रेंज में आप कर सकते हो, नो डाउट इनटू दैट, बट कहाँ पे और कैसे ट्रेड करना है या फिर आप ट्रेंड कैसे यहाँ पे सेट करोगे कि कौन से ट्रेंड में चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या चल रहा है मार्केट में, तो ये आप कैसे करोगे? ओके, तो ये मैं ईएमए भी हटाता हूँ, ये मैं ऐसे ही लगा के रखता हूँ फॉर रेफरेंस, 9 and 20 ईएमए, यू गाइस माइट नो दिस, ठीक है। सो ये मुझे पता चला कि मार्केट क्या है, कैसे चल रहा है, मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, ज़्यादा मतलब जितना अभी आपको दिखाया उतना नहीं देखता हूँ मैं मेजरली। मेरा जो है तो वो मैं स्ट्रक्चर मार्किंग जहाँ से मुझे चाहिए वहाँ से मैं चालू करता हूँ टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ओके। सो बेसिकली मैं स्ट्रक्चर मार्किंग चालू करता हूँ फ्रॉम हियर, यू कुड सी इट हैज़ गॉन अप, okay, you could take here, then it went down, this is higher high, sorry, lower high, lower low, lower high, it came down, it did not, I mean, it did not do the breakout structure, then it changed its character, then again it changed its character over here, you could say. So you could identify that it's in a uptrend right now. Okay, so it's retracing, but it will break the structure and it might, you know, change the character again, and the downtrend will start again in a higher time frame. This is for the 4 hours. Then I'll go to 1 hour. In 1 hour, the structure is pretty clear. You could see here. Okay, so it changed the character over here. Then it went on from lower low, lower high to higher high, higher low. Could you count that? No, I will not count that. It came here, it did a dual change of character, it went up here. Now it's coming to retracement, but there will the retracement point, it has crossed it and took the liquidity. So now it might, change its character again and it will change the trend again. Okay. So this then again, how do I mark my level? Okay, I've identified the trend. Now I want to know when I have to buy and when I have to, put my stop loss, when I have to set my target. So my stop loss is fixed, that is maximum 30 pips. Okay, that is my stop loss. So what I do is when I've identified the market structure, this is for 1 hour, then I go to 15 minutes. Into 15 minutes, what do you see? The market has turned its character and it's already in the bearish trend. It has gone into a bearish trend. As you can see, it's all selling, selling, selling. It's all red. Okay, to identify the entry, I took an entry, I guess somewhere around here or here somewhere for a retracement buy. So what I do is I wait, I take a swing high, I take a swing low, I take the Fibonacci retracement tool. Then I wait for my level, which is I'm comfortable in these levels 0.786 to 6.18. This is my trading zone. Okay, I usually trade in this zone. So यहाँ पे अगर आता है, I see there are two big green candles showing the retracement candles, I could say, in 15 minutes. Okay, I wait for it to come over here. Usually I wait for it to come over here, but whenever I see a red candle in 5 minutes, like as you can see, this is a weak candle over here. Okay, यहाँ पे ये एक weak candle आपको दिख रहा है कि ये अभी buying यहाँ पे खत्म हो चुका है. Then I wait for another candle, red engulfing candle you could see.
ओके, सो ये कैंडल जब दिखता है देन आई प्लेस द ट्रेड एंड देन हाउ डज इट लुक, how will it look after this candle? I'm putting a short trade. It is going to be like this. 30 pips कहाँ पे आता है? First, if I take down it a little bit more, yeah, there is the 30 pips. And my target is of around 100 pips, I could say. Yeah, basically, I take 100 pips target. I put on 100 pips target. Reason being, this distance is 100 pips plus. If it crosses this recent low, there is a break of structure. That means the trend is continued. Okay, so तो ये ऐसा एक मेरा strategy. I know it is kind of hard for me to explain to you guys, but जैसे जैसे मैं ट्रेड करूंगा वैसे वैसे आप लोगों को ये समझ में आएगा. Okay, 3 people are watching me. Thank you guys. जो कोई भी है. So I trade basically on 5 minutes and 15 minutes. उसके नीचे बहुत rarely मैं जाता हूँ to trade. As you can see, there is a lot of things to digest over here. तो कैसे डाइजेस्ट करें? क्योंकि बेसिकली मैं मार्केट स्ट्रक्चर पे ट्रेड कर रहा हूँ. तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है फिर से. अगर आप देखते हो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है यहाँ पे, तो फिर ये फिर से डाउन ट्रेंड में चला गया. बहुत चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, सो वो मुझे वो लफड़े में नहीं पड़ना है. अगर ऐसा मार्केट है जहाँ पे दिख रहा है कि इट इज गोइंग डाउन अ लॉट, यानी कि बहुत ट्रेंड है, ये मुझे कल आइडेंटिफाई हुआ था एंड आई वाज करेक्ट अबाउट इट. व्हाई? रीजन बीइंग बिकॉज 4 आवर्स में आप देख रहे हो तो 4 आवर्स में अराउंड फोर 430 समथिंग पिप्स का इसने कल ओवरऑल ये दिया है, रन दिया है. ओके, 1000 पिप्स का दिया है. हाँ, इट वाज अबाउट यस्टरडे. कल क्या डेट था? आज क्या डेट है? 23rd. कल का कौन सा है? 22nd का है. ठीक है, तो ये यू कैन सी हियर इट हैज गिवन 185 एंड 250, वी कुड से अराउंड 300 400 पिप्स का इसने रन दिया. तो ये जो बायर से इनको निकालना तो पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे? तो सेलिंग आता है. तो दैट वाज द प्योर लॉजिक बिहाइंड दिस एंड अकॉर्डिंगली आई गेस आई हैव प्लेस्ड माय ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट. यप, सेल साइड की ये सारे ट्रेड मेरे फॉर दैट. बट आज आई डोंट नो व्हाई एसएल हंटिंग हुआ मेरा. आई गेस मेरा एंट्री गलत था. या होपफुली लेट्स सी हाउ इट गोस. बाकी बताओ आप लोग का कैसा चल रहा है? बताओ चैट में. दिस इज टॉकिंग स्ट्रीम, सो बताओ, बातें करते हैं. कैसे हो तुम लोग? चैट एंगेज हो जाओ. कैमरे का कुछ तो करना पड़ेगा, लाइट वगैरह लगाना पड़ेगा यहाँ कहीं पे तो. शक्ल मेरी काली काली दिख रही है. मैं काला हूँ नहीं, पर दिख रही है काली काली शक्ल. One more thing, I'm going to trade with lot size of 0.01, जो कि सबसे छोटा वाला लॉट है. ठीक है, आप लोग को जो बोलना है, जो सही लगता है बोलो. मुझे जो सही लगता है वो मैं कर रहा हूँ फिलहाल के लिए. Because even I am here to learn new things into market every day.
मेजरली आई ट्रेड इन गोल्ड, बीटीसी वगैरह भी मैं देखता हूँ बट बहुत रेयरली देखता हूँ। मार्केट देखो, एक वन डे कैंडल भी यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बना रहा है, सो इट इज यू नो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि क्यों सेलिंग में जा रहा है। We can do one thing, we can check if it is coming to this trend line or not. ये एक हम कर सकते हैं। Other than that, there is a support zone too. यहाँ पे आप एक support zone मार्क करके रख सकते हो। You can mark a support zone over here, इसको हरा कर दो। हाँ मैं कैट, एक सब्सक्राइबर बढ़ गए। थैंक यू। ये स्ट्रीमिंग का आई एम जस्ट लर्निंग, सो bear with me. Thank you for 4 likes. अभी क्या करेंगे? वी विल बी जस्ट वॉचिंग द मार्केट और कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं एक लाइट लगा लेता हूँ तो विल इट। यप, दिस लुक्स गुड। एक और लाइट है मेरे पास, वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। इसका वायर होगा क्या?